हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि डाटाबेस नोड देखे थे, क्या होता है देखा था। लो ऑर्डर नोड, देन फिल्टर नोड देखे थे, वो डिटेल में देखा था। ये तीनों नोड हम लोग देखे थे, ठीक है? और देखिए डाटाबेस नोड बेसिकली में परफॉर्म करते हैं डाटाबेस ऑपरेशन। ये लो ऑर्डर नोड अगर तो ऑर्डर में भेजना है मैसेज को, देन फ्लो ऑर्डर नोड एंड फिल्टर नोड अगर मैसेज को फिल्टर करना है तो फिल्टर नोड करते हैं, ठीक है? मतलब फिल्टरिंग लॉजिक पर इनसाइड द फिल्टर नोड। नाउ हम लोग इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं और इसके टाइमर नोड बेसिकली देखने वाले हैं। तो टाइमर नोड में जाइएगा तो यहाँ पर टाइमर के अंदर में बेसिकली टाइमर सेक्शन के अंदर में दो आता है, टाइम का आउट कंट्रोल नोड और टाइम आउट नोटिफिकेशन नोड। तो हम लोग इस लेक्चर देखने वाले हैं टाइम आउट नोटिफिकेशन नोड एंड अदर हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें देखने वाले हैं टाइम आउट कंट्रोल नोड। ओके, तो इसमें हम लोग ये बेसिकली दोनों देखने वाले हैं, टाइम आउट कंट्रोल एंड टाइम आउट नोटिफिकेशन। तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है। So let me just explain you what is this. Okay, both difference between them both. Okay, जस्ट एग्जाम्पल कि हम लोग के बहुत बार हम लोग देखे थे कि हम लोग क्या करना होता था कि हम लोग अगर एग्जाम्पल कि हम लोग कोई यहाँ पर डाटाबेस ऑपरेशन करना है, लाइक दैट इंसर्ट इनटू टेबल, कोई टेबल टेबल में इंसर्ट करना है लाइक दैट, और चाहे सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, टेबल सिलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन को, या अपडेट करना है टेबल में। ओके, तो इसके लिए हमको अगर सिंपल हमको यहाँ पर हमारा कोड में अगर सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट इसे कुछ करना है, देन उसके लिए हमको डाटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्शन करना है, राइट। और हमको जो है कुछ भी यहाँ पर इनपुट मैसेज की जरूरत नहीं है, राइट। हमको यहाँ पर इनपुट मैसेज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए क्या कि हमको जो है ये ये फ्लो चले और यहाँ पर जो है डाटाबेस में जो भी इंसर्शन अपडेशन जो भी करना है वो हो जाए। उसके बाद से फर्दर जो है मेरा ये फ्लो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो लेकिन हम लोग लास्ट टाइम देखे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, इंसर्शन होता था बट हम उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार फ्लो को इन्वोक करना पड़ता था। एटलीस्ट कुछ ना कुछ मैसेज इनपुट मैसेज में हमको ऐड डालना पड़ता था ताकि ये फ्लो एक्टिवेट हो, ताकि मेरा ये मैसेज फ्लो यहाँ से जाए, फिर जाकर यहाँ पर जाकर ये मैसेज इंसर्ट करे, अपडेट कर, डिलीट जो भी मतलब हमारा कोड में जैसा लिखा हुआ है। तो मतलब फ्लो को इन्वोक करना, फ्लो के लिए कुछ मैसेज को डालना पड़ता था। इफ यू रिमेंबर टू गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर देन यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस फ्लो को इन्वोक करना है, देन हम लोग कुछ मैसेज को इनपुट में ऐड करते थे, देन ये मैसेज मेरा ये फ्लो इन्वोक होता था और मैसेज मेरा फ्लो हो जाता था। ओके, ये मेरा सिंपल सा था, मेरा क्या बोलते हैं मतलब कंसेप्ट। बट हम लोग तो मैसेज बेकार में डाल रहे हैं, हम लोग मतलब मैसेज डालने की जरूरत नहीं था। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है टाइम आउट नोटिफिकेशन नोट लाया। मैंने हमने ऐसा एक नोट लाया जो कि इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो कि हम लोग बोल देंगे कि हाँ, यहाँ हर हर इसे 1 दिन में, चाहे हर 24 घंटा में, हर कितना दिन में तुमको जो है तुमको मैसेज को इन्वोक करना है, देन इट विल वर्क। ओके, ओके। नाउ तो ये जो है कितना देर में इन्वोक फ्लो करना है वो यहाँ पर हम टाइम यहाँ पर लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, मतलब ये टाइम आउट नोट के अंदर में। और मेरा मैसेज फ्लो ऑटोमेटिकली उस टाइमिंग के अंदर, उस टाइम के अंदर में वो इन्वॉक हो जाएगा और ये इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी करना हो कर देगा। ओके, तो लेट मी क्रिएट ए न्यू फ्लो एंड शो यू। ओके, तो एक फ्लो क्रिएट करते हैं, न्यू एप्लीकेशन। लेट मी राइट टाइमर नो टाइमर ऐप, लुकिंग गुड। नेक्स्ट, let me create a message flow. Let me write a timeout notification underscore timeout role, not like time. Okay, so this is basically my message from my habitat. Okay, now let me write the brokerage schema name. Just me it simple like that, like that. This dot looking good. Now let me click finish.
No, it's let me drag and drop the node. I know timeout node. Okay. Now we want to some do database operation. So let's choose the database node, or you can use a compute node. You want to do use the can use the same compute node. But if you want to if you want to do only database operation, then you can use the database node. If you want to do some modification, transformation, and like that, if you want to do, then you can just the compute node instead of database node. But here I am going to do use the only insert and whatever operation like the database operation, and I am going to the database node. Okay, now let me select here the data source name. Okay. Now if you go here, there is a unique identifier you need to give. What is unique? Does it mean unique identifier? Basically, every timer node basically require a value that uniquely identify that time. बेसिकली हर जितना भी टाइमर नोड है timer node, एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए होता है क्योंकि उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ दिस वैल्यू इंडिकेट्स दैट दिस बिलोंग टू दिस टाइमर नोड ओके तो कुछ भी यहाँ पर आप रैंडम ले सकते हैं राइट एट आई रिटन लाइक दैट सिंपल so you can write anything this basically identify that this is a timer node any timer one is belongs to the this timer node okay if you see here there is a option of the timeout interval. This basically told us after how many time, after how many basically seconds, basically this operation will be performed. Okay, so let me show you. Let me keep it as 20 seconds. Okay, after 20 seconds, this flow will be automatically done. This flow will be automatically done. Okay, let me. I want. If you want to draw, insert, update, delete, then you can do this mode. But let me do one thing. Let me use the compute mode. What I want to do. I want to perform something like that. Select some query from the table, select some data from the table, and give to the output. But you know that output root is not working inside the database node. In database node, uh, output root concept is not there, and uh, and no local environment visual concepts are I think not in database node, right? No compute node concept is there, no output root. I want to send some information to the output by fetching details from the database. Okay, so let me use the compute node. This will be good because I just thought that to create a flow like that in which I will going to fetch detail from the table and I will print detail into the output. So let me do like that right here the IIB. But we can try with the database node. Already I taught you database node. You can try with database node. You can insert, update, select, but you cannot send it to the output node. Really. That's the reason I want to do. That's the reason I selected.
compute node. Now my flow has been completed. You see here what I have done in basic. I have selected the unique identifier as timer one and timeout interval at 20 seconds. In every 20 seconds, this flow will be automatically got triggered once I deploy this application. In 20 minutes, in every 20 seconds, it will be automatically triggered. The parser option you can leave it is black it and you can use. Okay, let me add the also exception handling flow because in case some exception good to add the exception. Now we add the breakpoints. Now let me add the code inside. Okay, so I want to send something to output, right? So set output root dot xml. Basically, I want to send output in form of xml. Okay, and I want what I want to say. I want to send some table records. Okay, so let me get table record. And which table record I want to give? I want to give article table record. So let me get article because it is always prefer to write anything for readable. That's the reason I was writing that format. Basically, I was sending just some output which parentage table record inside that article repeating, and we are providing uh, सम हम जो बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिकल टेबल जो मेरा एक ऑलरेडी क्रिएट किए हैं उस आर्टिकल टेबल से इन्फॉर्मेशन करके और यहाँ वैल्यू को सेट करेगा आर्टिकल के अंदर. ओके, लेट मी डू लाइक दैट select equal to and what why I am providing here list expression because this article is going to be repeating continuously because I have lots of column will be there, so lots of row will be there, so this will going to be repeat. Okay, let's say that's the reason I am just selecting it. So let me select from it's okay. I'm just sending in the output under table record article will be there and under article all the this value is going to be there. First column, first row, second row, third row. These all are going to be under article. Every article, one row. Second article, second row. Precision I have given here. Let's see. Now my full row has been completed. Okay. One point you need to know here, but especially I am sending into output information. So then return true is okay. But if you want to see this output, then you need to also add a output node. Okay, so let me here add the output node. Let me out. We add the queue name. Let me select any queue name from here. Let me select the queue name which is good. Let me select the test.out. Okay, so we are sending some in the out and we are testing. Then name is looking good. Okay, put out. Okay, now we are expecting this flow to be trigger it automatically in interval of 20 seconds, and this action will going to perform. After that it is going to return out. In return out, sorry, return true. In return true, it is going to be we are going to get the details here. Okay, this queue जैसे ही 20 मिनट में फ्लो ट्रिगर ऑटोमेटिकली होगा और जो है यहाँ पर ये टेबल बेसिकली वैल्यू फेच करेगा और आउटपुट रूट में सेंड करेगा और इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. ओके, so let's see in debugger mode how it's working. Okay, before that we have created the flow, then we need to basically build the bar file. Okay, let's do it. Bar file, let me like the timer, anything you write as per your convenient.
timer app. So just click on finish. Set the application name. Into timer app. Build. Now it's done. Now it is done. Now let's deploy the bar file. Let's deploy the timer. Now it is deployed timer. Okay. Now launch the debugger. Debugger has been launched. Waits for 20 seconds. As soon as 20 seconds will be happen, this flow will be automatic trigger and message will put in. If you see initially in the test.out, there will be no message. Just take the test.out, test.out. See, one message just came. Let me clear the. Now you can see no message. Now the message has been 20 seconds happen. Message will came. You can see it's gone. Okay. Now let me clear the. Now you can see wait for 20 seconds. Message will came. Okay, message will came because this flow will automatically auto triggered in the interval of 20 seconds. Now see it will came again. If you go here, we are going basically insert sending some output in the article details. We are sending some output in output details. We are fetching details from the table, article table, and sending to the article. Okay, and we are returning true. Just return true. You can see same information in the this same information in the this. Under table record, we are getting article. Under this, all the table, all the basically मतलब टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है टेबल में if you टेबल नेम अभी खोले नहीं है basically database, but you can see if you remember these are the basically details in our table. So we are fetching details from the table and sending to the output. Okay. This you can see now 20 seconds already done. Now message came again 20 seconds already done. Then message came. There lots of messages are coming. You can see here lots message and all are same basically they are fetching details. You can see all three message. Now let me show you one thing. Okay. Now here I have set at 20 seconds. Let's think business is expecting the, the output of the table in once a day. Business is expecting output of a table. This output of the table, this business is expecting output of all table, but once in a day. Okay, so you can write here in you can write here the 24 hour whatever the time second in second. Then if you 24 hour you convert into this minute, then you will just multiply by 16. It is 1440. If you multiply again by the 60, you will get in second. Yes, in second the value is 86400. 86400. Okay. Now once I kept here once 168400, you can see now this flow will be triggered once in a day. This flow will be triggered once in a day. Okay. But one point to be noted. Okay. I launch the debugger. Okay. And we'll save the bar file. Okay. And deploy it. If I launch a debugger, then the जब भी हम लोग फ्लो को डिप्लॉय करते हैं जैसे जब भी हम लोग फ्लो क्या करते हैं डिप्लॉय करते हैं basically, वो जो है अभी 20 सेकंड लेके बैठा हुआ है। जब भी हम फ्लो को डिप्लॉय करते हैं ये जो है फ्लो जो है ऑटोमेटिकली उस समय के लिए जो है एक बार हिट होता है उसके बाद जो है लेट मी डिप्लॉय इट डिप्लॉइंग कैंसिल इट एंड फर्स्ट डिलीट दिस एप्लीकेशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर इनिशियली जब हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक बार एप्लीकेशन हिट होता है।
उसका से डेली जो है, जो टाइम हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं प्रॉपर्टी में, उतना टाइम बेसिकली वो हीट होगा। हम इसे मेंशन किए हैं 24 आवर। तो अभी जैसे हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो एक बार हीट होगा, उसके बाद से जो है डेली फिर जो है वो 24 आवर हीट होता रहेगा। ये फॉलो होता है। वंस वी डिप्लॉय द एप्लीकेशन, initially it hits one application at a one time, and after that it hits the application, it automatically trigger the flow in an interval of 20 whatever the time here okay. If we give 24 hours, in 24 hours it will be okay. So let me just launch the debugger. Okay, now let me deploy the application. Now see, initially once you deploy the application, you can see flow has been heated. फ्लो हिट हो चुका है और ये क्या होगा, ये इंसर्ट करेगा, फिर ये आउटपुट में भेज देगा, ठीक है। नाउ अब ये वेट करेगा तब तक जब तक ये टाइमिंग हमारा इतना सेकंड ना हो। तो अगेन ये फ्लो अगर देखा जाए तो अगेन ये फ्लो कल जाके 18 तारीख को, 18 अगस्त को जो है ये 11:30 में हिट होगा। फिर डेली जो है 11:30 में 11:30 में 11:30 में एक बार हिट होगा। फिर 19 तारीख को 11:30 में हिट होगा, तारीख को 11:30 में, इस तरह से हिट होता जाएगा। ओके, इस तरह से फ्लो जो है मेरा हिट होते जाएगा, हिट होते जाएगा। तो ये एक तरीका है, मतलब कि एक फिक्स टाइम में इन्फॉर्मेशन को भेजने का। इस तरह से मेरा जो है एक फ्लो जो है कल हिट होगा और ये 11:30 नाउ इसमें, लेकिन एक इसमें देयर इज ए इश्यू इनसाइड इट। ओके, क्या इश्यू जाता है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल कि अभी तो 11:30 में हुआ, लेकिन इन बिटवीन कल 11:30 में जैसे ही होने वाला था, उसने क्या किया, इस एग्जीक्यूशन ग्रुप को क्या किया उसने, किसी ने मतलब स्टॉप कर दिया और 2-4 मिनट डिले हो गया। तो क्या होगा, ये जो है अब 2-4 मिनट बाद ये हिट होगा। उससे क्या होगा, टाइमिंग चेंज हो जाएगा, अब डेली 2-4 मिनट बाद हिट होने लगेगा। फिर अगला दिन, उसके 2-4 दिन बाद फिर एक इश्यू होता है और फिर उस टाइम, जिस टाइम पर मतलब जो ये ट्रिगर होने वाला था उस टाइम पर कुछ इश्यू होता है और मेरा पीजीए स्टॉप हो जाता है, चाहे एप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है, कुछ कारण से, लेकिन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिर टाइमिंग चेंज हो जाएगा, फिर उससे क्या होगा, मेरा जो है वो जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे हिट हो जाएगा। मे बी उस दिन हिट ना हो, अगला दिन फिर डिफरेंट टाइमिंग पे हिट हो। टाइमिंग जो है मतलब इस तरीका से जो है ये सेकंड देगा। वी कैन नॉट फिक्स द टाइमिंग एट 11:30। फॉर एग्जाम्पल कि हमको 11:30 में ही फ्लो को हिट करना है। आई वांट टू फ्लो द हीट डेली एट 11:30। ओके, देन उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको जो है देन पिक्चर में आता है मेरा टाइम आउट कंट्रोल नोड। टाइम आउट कंट्रोल नोड बेसिकली हेल्प अस टू फिक्स द टाइमिंग ऑफ ए इन द फ्लो। ओके, फ्लो को हिट करने के टाइम को फिक्स करने में बेसिकली आता है मेरे पास टाइम आउट कंट्रोल नोड। ओके, इस तरह से हम लोग बेसिकली टाइम आउट कंट्रोल नोड का यूज कर सकते हैं टू फिक्स द टाइमिंग। तो हम लोग यहाँ पर टाइम आउट नोटिफिकेशन होप समझ में आ गया होगा। टाइम आउट नोटिफिकेशन हम लोग विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, so hope you have a clear about the timeout notification node. If it out हो तो you can comment me and you can reach out to me over the comment, and you can also mail me over the learnandpassofficial@gmail.com. होप फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू बाय, सी यू अगेन।